सो मैम सबसे पहले आज के लॉन्च के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या कुछ बताना। आज के लॉन्च के बारे में I am a dog lover, as you all know. I have a cute little pet called Disco, and I think pet nutrition is something that over the time I've realized is so important. Especially Disco is my first pet, so I had no idea like what is good for him, what is not good for him. What kind of food he should have, and sometimes you start feeling as humans that नेचुरल खाना ज़रूरी होता है, चाहिए होता है, सब्जियां चाहिए होती हैं जो हम खाते हैं, बट एक्चुअली डॉग्स आर वेरी डिफरेंटली मेड एंड आई फील लाइक दे नीड अ बैलेंस डाइट, एंड ऑल्सो एवरी डॉग इज़ वेरी डिफरेंट. लाइक डिस्को इज़ very allergy prone, so he needs a specific kind of food. There are certain allergies that he has which shouldn't be there in his food, and IMS, when they sort of came to me, I was very fascinated by the fact that they have tailored nutrition for pets. So different kinds of dogs, they have different kind of food for them based on the dog's requirement, which is amazing, and it's a brand that's been in US and in Japan and like many other countries for like above 70 years. So now it's coming here, and I think I've always been clueless till now. I've not found the right brand for my pet, so I would love to try the brand and make Disco try new food. कोई ऐसी मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें पेट्स के साथ? Yeah. I mean, food से related? Yeah. I think it's lovely to have a dog at home. I think he's Disco's family, and मैं रहती हूँ, मेरी बहन रहती है, मेरी एक हाउस हेल्प है वो रहती है, and Disco है, and that's our family. And चाहे आप कहीं से भी आओ, आप कितना भी थके हुए हो, आपका दिन बुरा गया है, नींद आ रही है या जो भी है, whenever I come after a very long time, especially the way he sort of he smells you coming outside only, so he's at the door before anybody else, और वो जिस तरह से स्वागत करता है फुल उछल कर पूरा लिक करके, like he really, I think dogs really express their love, and it's unconditional. It's not dependent on what you have been like or how you are as a person. It's just there. So yeah, that's one of the most amazing parts. So whenever I go back home, I'm like, मेरा मूड जैसा भी हो वो अच्छा हो जाता है. जब कोई पेट्स को हार्म करता है, उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? Of course, I get very angry. In fact, even during Diwali and all, मैं इतना बोलती हूँ दिवाली होली के टाइम पर, इतना रिक्वेस्ट करती हूँ, because I feel like we only think about ourselves. The पटाखास, the crackers, जितना dogs को और pets को harm करते हैं, they get so scared. For them the sound is way louder, so they get really scared, and it's not good for them. Also, the pollution is not good for them. I also hate sometimes how people treat street dogs. And so for me, I think once you start having that soft corner for animals in general, आप कहीं पे भी हो, चाहे मैं वैनिटी के पास हूँ, मैं कहीं और शूट कर रही हूँ दूर, if I see any dogs around me, I have that urge to make them eat something, whether it's some biscuits or something. So I just feel that they are a part of our society, of our world, and they're equally important, and there's no one to take care of them the way we have people. So जितना आप compassionate हो सकते हैं, please होना ज़रूरी है. आपकी फिल्म पानीपत बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कमाई कर रही है, और आपके कैरेक्टर को काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, क्या कुछ? जी, आई मीन ऑब्वियसली मेरे लिए मेरी पहली हिस्टोरिकल फिल्म है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि लोगों को फिल्म पसंद आए, कैरेक्टर पसंद आए, परफॉर्मेंस पसंद आए, और जिस तरह के रिव्यूज़ मिले हैं, आई डोंट थिंक मुझे किसी भी फिल्म के लिए इतने पॉजिटिव और इनकरेजिंग रिव्यूज़ मिले हैं, स्पेशली परफॉर्मेंस को लेकर. And Parvati Bai is actually the most difficult and the most different character for me. Maharashtrian, किसी और सदी से belong करने वाली, someone who's also a passionate lover, but at the same time can pick up a sword and fight for her people. So I think for me it was very important for people to connect with the character. And I'm really happy and so overwhelmed कि ये साल जो है वो इतना अच्छा ख़त्म हो रहा है with so much appreciation and so much positivity coming for the character, for the performance, and it only encourages me every time to like sort of do something more and riskier and better. Okay, और कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो शेयर करना चाहेंगे?
मैं अभी मिमी के लिए फ़िलहाल शूट कर रही हूँ। एक स्केड्यूल हो गया है, करीबन 40% ख़त्म हो गई है फिल्म। मंडावा में शूट कर रहे हैं और नेक्स्ट स्केड्यूल फरवरी में है, तो अभी थोड़ा छुट्टी टाइम है, रिलैक्स टाइम है। 4 रिलीज़ेस रही हैं इस साल, काफ़ी बिजी गया है, सो दिस इज़ लाइक माई टाइम दैट आई एम टेकिंग ऑफ एंड जस्ट स्पेंडिंग विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर काफ़ी विरोध किया जा रहा है, सो उस पर आपकी क्या स्टैंड है? Well, right now, to be very honest, whatever is happening in general, it really saddens me because there's so much violence, which is not a solution to anything, and I feel like violence से कुछ हमें हासिल नहीं होगा. Right now, what we need is proper conversation on the topic. People need to be heard. The students who are protesting, I think silent protest is something which is our right. So people who are protesting, they need to have a conversation with the government, and I think the point of views need to come out. So only the violence part is something right now which needs to be curbed, and right now we all need to come together as a secular India that we are, and just have a conversation as adults and sort the issue out. Thank you so much.